Hello and welcome back to your channel. As in previous one, we have done the calculation how to find the zeros of linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So how to find the zeros? By doing your calculation with your pen. Okay. So now the second thing come, it is different thing. Same solution will come by graphical method. Okay, so you have to use the graph, and by using graph you have to find the solution. That calculation when you knows, you can find like that also, and you knows that are the solutions. Okay, so now let us see how to draw the graph. Very first let us take the linear one. So the first one, linear equation, as we took in previous one, 2x plus 3. This was a linear equation we took. So we have done the calculation. The solution was minus 3 upon 2. Okay. So now here we will draw a graph. So let us assume this is some other variable y. Y is equals to 2x plus 3. Why you assume this? Because there are two axes, x-axis and y-axis. As you know in the graph, this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis, this is negative y-axis. You can write the number like this. But how to draw directly? So for drawing in the graph, you want coordinates, na? You know, in 9th class you have done what coordinates? When x is equals to 2, y is equals to 7. So these coordinates you have drawn in coordinate geometry. When x is equals to 2, y is equals to 7. This is the point, 2, 7. Okay, x is 2 and y is 7. So like this, we want these coordinates, the value of x and y. How to find these values first? We have to find these points. Okay, then only we can draw the graph. So this is a polynomial 2x plus 3. So for finding the points, we have to draw one table. So always remember, whenever they are saying by graphical method find the zeros, always you have to draw the table, because you have to find the coordinates. Without drawing the table, if you are doing, let us say you are doing wrong. Okay, so first find the value of x, and second one, what is the value of y? Value of y is 2x plus 3. The first one x, second one column is row is y. So let us take different values. If we will take 2, 3 values, 4 values, that are enough. So let us put all the values 0. X is equals to 0. Let me put x is equals to 0. So when we will put x is equals to 0, तो x की जगह 0 रखो. तो polynomial क्या है? 2x plus 3. x की जगह 0 रखो. 2 into 0 plus 3. 2 zeros are 0 plus 3. तो ये y था. y is equals to y is equals to. तो y is equals to क्या आ गया? 3. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. ठीक है. ऐसे ही x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखो. x की वैल्यू अब मैं रख देती हूँ इसमें. क्या है? y is equals to 2x plus 3 है ना. तो y की वैल्यू चाहिए. x की कोई भी वैल्यू रख दो, -2 रख दो. ओके, तो 2 into x की जगह -2 रख दो प्लस 3. तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं. प्लस माइनस -4 प्लस 3 -1. तो x की वैल्यू जब कर रहे हैं -2, तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है? -1. अब इसी में x की जगह +2 रख कर देखो. +2. सो इफ इल टू +2 रखेंगे तो 2 2 4 + 3 7 आ जाएगी. तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी. +3 रखो. 3 2 6 7 8 9 आ जाएगी. ओके, so like this our value will come. We can put -1 also. This is very big. If you want to put -1 रख के देख लो. x की जगह -1. तो 2 into -1 is -2 plus 3. तो प्लस माइनस +1 आ गई. ठीक है. तो x की वैल्यू -1 के लिए +1. तो this is our table. Very first you have to draw this table, from where you have to put different value of x, you will get a value of y. Okay, we have drawn this table. Now first coordinate is -2, -1. x, y, x, y, x, y, x, y. One pair, second pair, third pair, fourth pair. Let us draw the graph easily. Okay. When x is equals to -2, here y is equals to -1. This one. So we got the point. This. Let me see. This is a point. When x is equals to 0, y is equals to 3. X is equals to 0, y is equals to 3. This is B point we got. X is equals to +2, y equals to 7. This is third point we will get. X is equals to -1, y is equals to +1. 4 point we get.
join the points. Okay, so from here to here, then here to here. So we will join, because if you draw in your graph paper, so exactly because graph paper has equal, so then this point. So you will draw, you will find that the straight line will come, exactly a straight line. You will draw with ruler, all the points will meet like this. Okay, so this is linear equation. Linear means straight line. Okay, so having power 1, so it is always straight line. What is this? This is y is equals to 2x plus 3. You have to write this in the graph and it will come a straight line. So where is the solution? Okay. Solution, you know, the solution of this is minus 3 upon 2. By doing the calculation, 2x, when you are doing the calculation, so from here you got x is equals to minus 3 upon 2. Roughly you knows this. You knows by calculation. So from the graph, the same value should come. X is equals to minus 3.3 upon 2. So this is minus 1.5. Okay. So minus 1.5, तो x की वैल्यू जो है minus 1.5, तो x एक्सेस है minus 1.5 पर कट कर रहा है ग्राफ. Okay. So what are the zeros? Find the zeros. Wherever the graph cuts the x-axis, y-axis को नहीं. Wherever the graph cut the x-axis, that is the zero of the variable. तो ये ग्राफ x-axis को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है. तो कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होंगे. तो इससे पता चल जाता है अगर 0 1 है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है. ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो दिस इज minus 3 upon 2. This is the 0, means the value of x. Okay, fine. Come to the next graph. Let me do this. So next graph, plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So let us take a next polynomial. Now let us take the quadratic polynomials. Okay, so the quadratic polynomials, as we took this, so we will take this x square minus 3x minus 4. Let me take y is equals to this, because y coordinate also we want. So quickly you draw the graph for this. First the value of x, second the value of y. Okay, what is y? X square minus 3x minus 4. फटाफट रखो, x की जगह minus 2. So minus 2 का स्क्वायर minus 3 into minus 2 minus 4. minus 2 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव इवन नंबर होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है. 2 2 is 4 minus minus plus 6 minus 4. So value is 6. तो y की वैल्यू 6 आ जा रही है. जब x minus 2 है तो y कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है. अब minus 1 रख दो. x की जगह minus 1 का स्क्वायर minus 3 into minus 1 plus 4. So 1 minus minus plus 3 plus 4. 4 5 6 7 8. तो minus 1 आ रहा तो 8 आ गई. ठीक है, अब 0 रख दो. 0 minus 3 into 0 0 minus 4. तो y की वैल्यू minus 4. 0 के लिए minus 4. Plus 1. So if we put plus 1, so 1 minus 3 minus 4. 1 minus 7 minus 6. Okay, plus 2. So like this we will put 1 by 1 and you will put plus 2 also. Okay, so few values you have to put. Now let us draw the graph. X is equals to minus 2 comma 6. X is equals to minus 2 6. We'll point get 1 point. Minus 1 comma 8. Minus 1 comma 8 will come somewhere here because this is 7 and then 8 will also be there. Okay, 0 comma minus 4. 0 comma x axis में minus 4 का है, ये है. Okay, this point we get. And 1 comma minus 6. 1 comma minus 6. ये हमारा दूसरा है. तो ऐसे करके अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे, get the point. This point, this point, this point, this point, this point. Let us take some more point for this, because let us take x is equals to minus 3. Okay, here x is equals to plus 3. So x square minus 3x minus 4. X is equals to plus 3. So 3 square minus 3 into 3 minus 4. 3 3s are 9 minus 3 3s are 9 minus
4. सो -4 +3 के लिए -4 आ गया, +3 के लिए -4. तो ग्राफ विल कम लाइक दिस. अब हम ले लेते हैं 6 के लिए. ठीक है, तो कुछ वैल्यू हम कुछ भी कर लेते हैं. x इज इक्वल टू +6, तो +6 रखो. 6 स्क्वायर -3 इंटू 6 -4, 36 -18 -4, 36 -22. तो दिस विल कम 6 -2 4 एंड 3 -2 1 14. तो जब x की वैल्यू क्या है 6 है तो ये 14 आ गया. तो x की वैल्यू जब 6 है तो y कितना आ गया 14, ऊपर गए. तो यहाँ के बाद फिर हम कहाँ मिलाएंगे, यहाँ. तो एक एक करके आप पॉइंट मिलाते रहिए. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिला -2,6, यहाँ हो गया. फिर -1,8 जो भी मिलेगा. तो ऐसे 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 मिलाते मिलाते व्हाट यू विल गेट दिस. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 +1 +3 4 -4 0 आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज कमिंग, दिस वाज 0. ठीक है, तो -1 के बाद -1 था तो ये 0 आ रहा है. तो इट विल कम टिल हियर. ठीक है, देन ये यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा ग्राफ. सो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला. ये ऐसा ग्राफ आए चाहे ऐसा ग्राफ आए तो इनको कहते हैं, इस टाइप के ग्राफ को, यू शेप के ग्राफ को कहते हैं पैराबोला. ये आप से पढ़ोगे तो इसका शेप पता चलना है. तो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड पैराबोला. ठीक है, सो नाउ every time, that means you have taken the quadratic equation, you got parabola. So whenever quadratic equation is given to you, the graph will come like this. 2x square -3 -4 ग्राफ का आएगा कहेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा. ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस टाइप का ग्राफ आएगा. जब पॉइंट्स होंगे तो ऐसे ध्यान रखना. -3x स्क्वायर +4x +2 या कुछ भी है तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा. लेकिन अगर मेरे पास ये है -6x स्क्वायर -4x +2 ऐसा ग्राफ है तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा नीचे को. ऐसा कैसे, जब आगे जो कांस्टेंट a होता है, जो a होता है अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन को, पैराबोला. अगर a जो होता है नेगेटिव होता है, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो ध्यान रखना इसका ग्राफ ऐसा आएगा. ये पहले से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि दैट द ग्राफ विल कम लाइक दिस एंड दिस ग्राफ विल कम लाइक दिस. So from here, same way you will do cubic also. One by one you will put the values of x, y and everything. Okay. Now I told you how many times the graph will cut x-axis, that many zeros are there. उतने ही जीरो होते हैं. ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड से. Let us take exercise 2.1. Okay. Let us take quickly 2.1 because only one question is there. So exercise 2.1. So the first graph is given like this. Second graph is given like this to you. Third graph is given like this. Fourth graph is given like this. And fifth graph is given to you like this. Okay. And let me take one more graph. Okay, so the question is the graph of py is equals to px are given in figure 2.10 given below. For some polynomial px, find the number of zeros in each case. तो हर केस में number of zeros निकालने हैं आपको. Okay, so in this case I told you how many times it will cut the x-axis, that many zeros are there. ये जो ग्राफ है ये x-axis को it is not cutting, so that means there are no zeros. इसके कोई zeros ही नहीं है, कोई solution ही नहीं है. ठीक है, इस वाले ग्राफ में तो y-axis को कट कर रहा है, ये कट रहा है. x-axis को ग्राफ only one time कट कर रहा है तो there are 1 zeros. Okay, so 1 zeros आ गए. 2 times it is cutting x-axis, 2 zeros हैं इसके. देखो quadratic equation का ग्राफ है, पैराबोला. 1 2 3 4 zeros. And how many zeros? 1 2 3 zeros. ये वाला
एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा है तो नो zeros. Okay, then your exercise 2.1 is over. Okay, hope you understand this. If you want more things, revise the video, see again and again, and practice in your rough notebook. This is very easily you will get. Next we will do it next. Thank you very much. Bye bye.